Hi everyone, welcome to the channel and to this YouTube live in which we are going to be talking about a lot of things related to the UGC NET 14th June 2023 exam for specifically for English literature, but we would be also touching on topics related to UGC NET paper 1. I would want to know if my voice is clearly audible to each one of you out there so that I can go ahead and start today's discussion. So I'll just be waiting for people to reply whether I'm audible to each one of you. Hi, Tarushi, I can see your comment. Namaste. Mosmi, good evening. Jeshri says yes. Prachi says, yes, ma'am, your voice is clear. Thank you so much. So now that everything is set, we can start with today's live. Now, I have decided a format for today's live because there is so much that I want to talk about. I have been receiving a lot of messages and calls from students talking about the paper, asking a lot of questions about the paper, about the cutoff. We'll be talking about all of that. So I would just want to begin the session by giving you a small blueprint on what all topics we are going to touch. And I am also going to take up your questions one by one. So, the first thing that we are going to talk about is the UGC NET paper 1 that happened on 14th of June, what I think about it, what kind of questions were there, what was the difficulty level of the paper. After that, we'll be talking about UGC NET paper 2. This is, that we are going to answer a lot of questions related to elephant in the room. We'll be talking about kin topics se questions I will be talking about the difficulty level of the paper. We will also talk about what was the change in the paper pattern. Okay, so first thing, UGC NET paper 1 we'll discuss, then we'll discuss UGC NET paper 2. Then overall analysis we are going to discuss. The third thing that I'm going to touch upon is the overall analysis. How was the overall paper? What I think about it? Was it hard? Was it okay? Uh, what I would rather not say that what was the impression of students about the paper. I would rather say that if I want to share my views on how the paper went for different kinds of students. So जिनकी प्रेपरेशन कम थी उनके हिसाब से पेपर कैसा था, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, what they thought about the paper, those who studied from different books, जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट थे उनको पेपर कैसा लगा, जिन्होंने यूजीसी नेट के पास्ट ईयर पेपर्स देखे हैं उनको कैसा लगा. सो सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है एंड उन सब अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स का क्या मानना है पेपर के बारे में. आई एम गोइंग टू शेयर दैट एंड बेस्ड ऑन ऑल दीज रिव्यूज मेरा क्या कहना है पेपर के बारे में. आई एम गोइंग टू शेयर दैट. सो द थर्ड थिंग इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द पेपर. Then we are going to talk about the most important question, which is the cutoff. कि मेरे हिसाब से what will be the cutoff this time, and we are also going to talk about how do you know right now if you have qualified or not. Okay, so I'm going to also give you some tips and tricks on how you can find out whether you have qualified the cutoff or you have not qualified the cutoff. And finally, we'll be talking about what should be the strategy for the upcoming net exam, that is December 2023. And finally, I'm also going to end the live YouTube live by talking about the timetable that you should be following for the upcoming months. So these are the 7 topics that we are going to cover. I'll repeat very quickly so that you can just write it down. This webinar is going to be around 30 to 40 minutes. I'm also going to take up a few questions by asked by you people in the comment section. So आपके कोई भी question हो, कोई भी सवाल हो, please put that in the comment section below. Even though I am explaining something else, ये comments मैं बाद में पढ़ूंगी and I'm going to definitely address them in my next YouTube live, or if possible in today's YouTube live. So don't shy away from asking your queries. These queries are very very helpful for each one of you because किसी एक का question बाकी काफी लोगों के questions को answer करता है. Okay, I'll keep the language of this YouTube live
English. Sometimes I would be switching towards Hindi, but majority of the time I would be sticking to English, as I know that a lot of South Indian students are there. So quickly, what are the 7 topics that we are going to cover today? We are going to talk about UGC NET Paper 1 that happened on 14th of June. We'll talk about UGC NET Paper 2 English of 14th of June, both the shifts, shift 1 and shift 2. We'll talk about the overall analysis. We'll talk about the expected cutoff. We'll talk about how to know whether you've qualified the exam. We'll talk about what should be the strategy for December 2023 and what should be the ideal timetable for the December 2003 attempt, considering that somebody of you have already covered certain portion of syllabus in this exam. So what should be your strategy for December 2023? Okay, so without any further delay, let's jump right into the topic. Let me just see a few comments till the time more people join us live. So we have Sandeep says hi Sandeep. Prachi says hello. Then we have Zubi saying good evening, ma'am. Good evening. We have Kushbi Lahore. Hello, ma'am, from Haryana. Hi, Kushbu. Mosmi says, how are you, ma'am? I'm good. Very, very happy with the paper and how all my students have performed. So, feeling very contented. Rishikesh says, lots of love from Kolkata. Rishikesh, very, very beautiful name. I really love this name. Lots of love from Jaipur. Then we have Garima saying, good evening, ma'am. Then I have missed a few comments. Yes, it says from West Bengal, ma'am, following you all the time, ma'am. Such a crispy video and love your voice and your teaching style. Clears concepts, very amazing. Thank you so much, Iti. I am very, very glad that my videos are helping you. Then we have Dave says people are saying that cheating has taken place. So what is the use of expecting a cutoff? This is so saddening. Dave, number one, I would want you to stay away from the rumors and the lot of comments that are coming across your way. I know that काफी लोग कुछ कुछ बातें कह रहे हैं, but अभी के लिए ये देखना जरूरी है कि पेपर कैसा था, क्वेश्चंस किस टाइप के थे, क्या होगा, what will be the take of UGC about all these topics. Let us leave it to UGC. We are nobody to comment on this. We are nobody to influence their decision. They are a bunch of really educated people who know what is best for the entire country. So they would consider all the factors and then they are going to release their verdict. So let's not talk about all the comments and news that is spreading around all of us. Then we have लिटरली फर्स्ट बाय मयंक मैम बहुत लोग कह रहे हैं शिफ्ट 1 पेपर 2 सिंपल था बट आपका क्या व्यू है आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट मयंक वेरी शॉर्टली संगीता सेज हेलो मैम सूरज सेज गुड इवनिंग Ting Tong says, hello, good evening, ma'am. Hello, Ting Tong. Mukesh says, good evening, ma'am. Anu says, hello, ma'am, from Kurukshetra. Hi. Raju says, my name is Raju Kumar. I'm preparing for UGC NET with the help of your content provided on website and chronology. Thank you so much, ma'am. You're the best teacher. Thank you so much, Raju. I'm very, very glad. Thank you, ma'am, for appreciating the name and lots of happiness for your marriage. Thank you. Thank you so much. Okay, so now that we have so many people with us, let's just talk about the first topic, that is UGC NET Paper 1. Now, one thing that I have understood after interacting with the students who were enrolled with me and who were the part of the webinar, the Zoom webinar that I conducted on 15th of June, is that there was a surprising change in paper 1 this time. So every time what happens is that out of the 10 units that we have in paper 1, 5 questions per unit comes. Okay, so out of 10 units, 5 questions are coming. So total 50 questions are coming in paper 1. This time there was a shift. So what was that shift? That कई स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि हायर एजुकेशन से क्वेश्चंस ही नहीं आए. दे हैव एक्सक्लूडेड अ फुल यूनिट जहां 5 क्वेश्चंस आते थे. दे हैव जस्ट आस्क्ड 1 or 2 questions. At times they have not even asked a question. Shift 2 में ये बोला गया है कि
मैथ से क्वेश्चन नहीं थे. जैसे आई ऑल्सो इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स गिविंग कॉमर्स का पेपर विच हैपेंड ऑन 13th of June, because I wanted to know what is the change so that I can, brief my students who were sitting for 14th June paper. So मैंने 13th June के shift 1 के students से interact किया था, and they said that maths and logical reasoning से questions नहीं थे, which was very surprising, because what happens is every time from past so many years, UGC have adhered to the fact that from every unit 5 questions are coming. So what students do is that out of 10 units, if they are not very comfortable with practical portion, so वो 2 या 3 units छोड़ देते हैं, and they focus on 7 units. But problem इस बार ये थी कि जो 2-3 units उन्होंने छोड़े, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, और जो यूनिट्स वो करके गए वहां से क्वेश्चंस ही नहीं आए. सो दे वर इन अ वेरी मेस्ड अप स्टेट. सो जो भी हुआ, वी कैन नॉट चेंज दैट. ऐसा क्या हो सकता है फ्यूचर में? डेफिनेटली. बिकॉज मेरा एक अजम्पशन ये है कि व्हाट इज हैपनिंग is that earlier, before 2018, when UGC was conducting the pen and paper test कर रहा था नेट का, so उस टाइम पे what was happening was that uh, all the 84 subject students were sitting on the same day, and all over India में एक ही दिन में नेट का पेपर होता था. So they had to set literally one paper for UGC NET Paper 1. 50 questions ही उन्हें बनाने पड़ते थे. Then there was a shift. अब क्या हुआ कि पेपर 10 या 12 दिन में कंडक्ट होने लगे, 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट होने लगे. तो इन ऑल 20 sets of paper 1 उनको बनाना है. Now when they have to make 20 sets of paper 1, they have to play with the pattern. They cannot stick with the same questions. वो हर यूनिट में, हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस उन्हें देने होंगे. हर शिफ्ट में उन्हें पैटर्न को थोड़ा ट्विस्ट करना होगा, सो दैट किसी को ऐसा नहीं लगे कि अच्छा मेरा एग्जाम तो 18th को हुआ, तो 14th वाले पेपर को देख के मैंने कुछ क्वेश्चंस आंसर कर दिए, सो नाउ आई एम एट अ सेफर प्लेस. सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ चीटिंग, what they have to do, they have to play with the pattern. So from their side, it's very logical. Those of you who are watching this video and are preparing for UGC NET English, they know that UGC NET English में, though they have prescribed 10 units, but out of all the 10 units, every time हर यूनिट से सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं. दिस इज अ प्रूवन फैक्ट दैट ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म 70% पेपर आता है, एंड बाकी सारी यूनिट से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस ही आते हैं. ओके, सो सेम वे दे हैव स्टार्टेड द सेम काइंड ऑफ thing in paper 1 as well. So now what is happening in paper 1 is that they are going to ask any number of questions from any unit. So the lesson that you have to learn from this time is that you cannot leave any unit. All the units have to be done, because we are not sure कि आपके shift में कौन सी unit से कितने questions आएंगे. So you cannot leave it to your luck. You have to be very well prepared for paper 1. Okay, so very briefly, paper 1 में एक dramatic shift देखा गया है, which is that they have stopped adhering to same number of questions from each unit. नंबर 2, अगर हम पेपर पैटर्न के ओवरऑल बात करें, क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल में कोई फर्क नहीं था. एज यूजुअल फ्रॉम एवरी टाइम, एज आई से दैट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिपीट. So if you look at UGC NET paper 1, one thing is very very clear that अगर आपने past year papers को अच्छे से स्टडी किया है, so काफी बार सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, काफी बार सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट का मतलब ये है कि डिजिट्स बदल देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देंगे, बट सेम टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं. एक बार ये भी देखा गया था कि इंडियन लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए. लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है इंडियन लॉजिक, उसको कई बार स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट इस बार 4-5 क्वेश्चंस इंडियन लॉजिक से भी आए थे. नाउ माय सजेशन टू यू वुड बी दैट नंबर 1, प्लीज start going through past year papers whenever you are preparing for UGC NET paper 1, or you have to be very very vigilant about covering all the important topics. Okay, so this is one takeaway from paper 1 का जो एग्जाम हुआ. Now let's talk about UGC NET paper 2, something which scares every English literature aspirant, because they kind of do something different every time with the paper. So इस बार का पैटर्न क्या था? I have a set of questions जो मेरे को स्टूडेंट्स ने लिख के भेजे हैं. I am going to share those questions with you. But before that, let me just tell you my overall analysis about the paper. So something very, very simple that I understood this time also, that like always, British literature, literary theory and criticism was the
मेन पार्ट ऑफ द पेपर दिस टाइम. 70% क्वेश्चंस इन तीन टॉपिक्स से ही आए हैं. एंड एज आई ऑलवेज से टू एवरीबडी, आप मेरे यूट्यूब पे कोई भी 2 या 3 वीडियोस देख लीजिए, हर वीडियो में मैंने रिपीटेडली एक ही चीज बोली है कि इन 3 यूनिट्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. आप अमेरिकन, पोस्ट कॉलोनियल, यूरोपियन कुछ भी छोड़ के जाओ, बट ब्रिटिश लिटरेचर शुड बी ऑन योर टिप्स. लिटरेरी थियरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड बी ऑन योर टिप्स. एंड सेम चीज हुई इस बार भी. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस केम फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स. Now there are a lot of questions that came from chronology. A lot of students are worried कि chronology से इतने questions क्यों आए. As I always say कि हर बार इनके pattern में कुछ change होता है. And हर बार change इसलिए होता है so that ये भी एक्सपेरिमेंट करें जिससे बच्चे का टेस्ट हो पाए कि कहीं बच्चा एक ही तरह से पढ़ के पिछले बार जैसे पढ़ा वैसे ही पढ़ के और पेपर तो पास नहीं करा. ये देखा जाए कि उसकी नॉलेज कितनी एग्जॉस्टिव है, कि उसको हर तरह से चैलेंज करा जा रहा है फिर भी वो क्लियर कर पा रहा है. दैट इज व्हाट देयर एम इज टू कंडक्ट दिस एग्जाम. सो अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस की, सो अ वेरी सिंपल थिंग दैट आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि जो भी लोग मेरे कोर्स में एनरोल्ड है, आई हैव दिस हैबिट कि मैं जो भी लेक्चर्स लेती हूँ, वेदर इट्स अ वीडियो लेक्चर और एन ऑडियो लेक्चर, आई ऑलवेज टेल ऑल द वर्क्स इन chronological order. Plus, I also tell the dates on which these works were published. I always recommend students की dates याद मत करिए because there are 2000 plus works जिनकी dates mug up नहीं कर सकते हैं. It is humanly not possible. सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी राइटर के जब नोट्स बनाते हैं सो आप क्रोनोलॉजिकल सारे वर्क्स लिखे, सो दैट इफ यू हैव अ पिक्टोग्राफिक मेमोरी, सो आप जब पेजेस टर्न करेंगे, फोटोग्राफिक मेमोरी है तो आपको याद रहेगा कि ये वर्क पहले लिखा था, ये वर्क बाद में लिखा था. दैट मीन्स दिस वर्क वाज पब्लिश्ड फर्स्ट एंड दिस वर्क वाज पब्लिश्ड लेटर. That is a very simple way to attempt chronological questions. I would still not suggest you to mug up dates for the next exam because it is humanly not possible. आप करना चाहेंगे, आप 20, 30, 50 डेट्स एट मैक्स याद कर लेंगे, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज एक ही साल में 5 किताबें लिखी गई है. 1904 में कोई किताब है, 1905 में, 1906 में, आप कैसे याद रखेंगे. सो इट इज बेटर दैट आप हर राइटर के वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली लिखे एंड वैसे ही याद करें सो दैट आपके मेमोरी में वो ऑटोमेटिकली स्टोर होता जाए. Okay, now let me just take a moment and talk about the questions that came. So all my students gave the paper, so they were not in a position to memorize like the entire question, but they remember the name of the writer or the work from which the question was asked. So wo list of questions mere paas aaye hain, I've like my team has compiled all of them for this YouTube live so that I can share that with you. सो आई एम क्विकली गोइंग टू टेल यू क्या क्या आए हैं, एंड इफ इन केस मुझे किसी पे कमेंट करना है तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पॉज, कमेंट एंड देन कंटिन्यू विद द लिस्ट. सो मार्गरेट एटवुड से क्वेश्चन आया था. मुल्कराज आनंद के वर्क से क्वेश्चन आया है. जैक डेरिडा से क्वेश्चन आया है. जैक डेरिडा इज फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी. कल्चरल स्टडीज में रेमंड विलियम के वर्क से क्वेश्चन आया है. गॉडेस इन कंथापुरा से क्वेश्चन आया है. A.K. रामानुजन का प्रोफेशन क्या था वाज अ क्वेश्चन. मीना अलेक्जेंडर के वर्क से क्वेश्चन आया है. रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड से क्वेश्चन आया है. फ्रांसिस बेकन के क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आया है. बेन जॉनसन के प्लेस क्या थे उससे क्वेश्चन आया है. आई होप या आई एम विजिबल. देन egoistic sublime, which is a literary term given by John Keats, which comes under literary criticism. वहां से क्वेश्चन आया है. फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन इंग्लिश इन इंडिया, वहां से क्वेश्चन आया है. जॉर्ज हर्बर्ट के द ऑल्टर्स की क्रोनोलॉजी, जो वर्क्स के क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आया है. जॉर्ज हर्बर्ट इज मेटाफिजिकल पोएट. ट्रेजेडी ऑफ मिल्टन इन एरिस्टोटल्स मॉडल, अगेन लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है ये. ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है. देन हु सपोर्टेड इंग्लिश प्लस फ्रेंच ड्रामा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था. आई एम स्टिल नॉट श्योर कि किस राइटर का था, बट somebody who supported both English and French drama. I think this is a question coming from literary criticism because there are a lot of critics who were writing during the Renaissance time who talked about whether the English drama is better, French drama, or the classical Greek drama is better. Then Charles Dickens के works की lines आई है. शार्लेट ब्रॉन्टे के का कमेंट ऑन चार्ल्स डिकेंस, इससे क्वेश्चन आया है. थॉमस कार्ले कंडीशन ऑफ इंग्लैंड से क्वेश्चन आया है. थॉमस डे क्विंसी कैरेक्टर फ्रॉम जेन ऑस्टिन्स वर्क. फ्रैंकफर्ट स्कूल इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी. स्टुअर्ट हॉल की बुक से क्वेश्चन आया. स्टुअर्ट हॉल अगेन अ लिटरेरी क्रिटिक.
a literary critic, as in who comes under cultural studies, literary theory. Then there is a question that came from Manohar Mangalorkar's Combat of Shadow, which is again in Indian writing. Nizam Ezekiel se question hai, P. Lal se question hai. Then there was a question from Sri Aurobindo's work, Savitri. There was a question from Bhasa's work, which is a part of Indian aesthetics, जो हम Indian literature के अंडर लेते हैं. So those of you who are a part of my online course, I would want you to just remember जो modules में हमने divide कर रखा है. Fifth module के अंडर I teach this Sri Aurobindo's work. Sanskrit dramatist Bhasha's work, again Indian aesthetics का question है. Norm Chomsky module 7 literary theory से question है. William Empson 7 types of ambiguity, something that I always say कि इससे question आना ही है, वहां से आया है. I.A. Richards again new criticism से क्वेश्चन है. क्लिनिक बुक्स, मतलब न्यू क्रिटिसिज्म से 3 या 4 क्वेश्चंस आए हैं. वेल ब्रॉट ऑन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सब बुक्स के नाम जो आपने अगर लेक्चर्स सुने हैं, तो मैंने एक लाइन से बताया ना, आप आज ड्यू की इसे मेमोराइज करके ही जाना है. जॉन क्रो रैंसम न्यू क्रिटिसिज्म. जीन बॉल्डुआर से एक क्वेश्चन है. आप देखिए कितने क्वेश्चंस लिटरेरी थ्योरी से है. देन जैक लकान मिरर स्टेज, जो साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म में जब मैं स्टेजेस पढ़ाती हूँ, इडीगो, सुपर ईगो, देन आई टॉक अबाउट सिगमंड फ्रॉइड, वहीं पे जैक लकान की बात होती है, मिरर स्टेज की बात होती है, वहां से क्वेश्चन है. Then there's a question from Francis Bacon about a work that is dedicated to Queen Elizabeth. There's a question about John Arbuthnot, John Gray, Alexander Pope. All three of them British writers. Then there's a question from Cultural Capital. Pere Baldua की theory है. Again, something that I cover in cultural studies as well as in literary criticism module number 7. Raymond Williams से question है on the chronology. William Wordsworth, Tinton Abbey से question है. Philip Sidney के work से question है. Then Samuel Johnson की biography से question है. I don't know कौन सा biography पूछा गया है, because Samuel Johnson has written a lot of biographies, so which biography they've asked, but एक biography से question है. Tabula rasa, which is John Locke का एक concept which I teach under British literature. जब हम बात करते हैं सारे important critics की, तब जॉन लॉक का टैब्यूला रासा का कॉन्सेप्ट आता है. दैट माइंड इज अ ब्लैंक स्टेट. व्हेन अ पर्सन इज बोर्न, इट्स अ ब्लैंक स्टेट. उस पे नेचर वर्सेस नोचर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. मैथ्यू आर्नोल्ड का टचस्टोन, अगेन लिटरेरी क्रिटिसिज्म मॉड्यूल नंबर 7. थॉमस कार्ले से क्वेश्चन है. जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, टी.एस. एलियट का फेमस वर्क. माइकल एंजेलो एंड हैमलेट का जो रेफरेंस है, वहां से क्वेश्चन है. देन द मूवमेंट पोएट्स से क्वेश्चन है. मूवमेंट पोएट्स के कौन कौन पार्ट थे? all those who are a part of online course, you know, literary movements का एक अलग मॉड्यूल है जिसके अंदर हम एक मूवमेंट करके एक लेक्चर है जिसमें हम सारे मूवमेंट पोएट्स की बात करते हैं. ये वहां से आया है. एडगर एलन पो के क्वेश्चन है. देन डब्ल्यू एच ऑर्डन से क्वेश्चन है. मीनिंग ऑफ हैबिटस, पार्ट ऑफ कल्चरल स्टडीज, वहां से क्वेश्चन है. विलियम फॉल्कनर के वर्क से क्वेश्चन है. एप्सिलम एप्सिलम एंड लाइट इन ऑगस्ट, ये 2 वर्क से. एडवर्ड एल्बी का जू स्टोरी से क्वेश्चन आया था. बीट जनरेशन, एलन गिन्सबर्ग, जैक कराउ ने जो लिखा है. बीट जनरेशन अगेन कम्स अंडर मॉड्यूल ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स, वहां से क्वेश्चन आया है. सो बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, बट माय इंटेंशन बिहाइंड शेयरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस विद यू इज टू टेल यू कि किस टाइप के और किन किन राइटर्स से क्वेश्चन आए थे. नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू वेरी वेरी सिंपली स्टेट कि पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, दे हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनी अननोन राइटर्स. ये जितने भी टॉपिक्स हैं, दोज ऑफ यू आर अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्स, आपको तो याद है ही कहाँ कहाँ हमने क्या चीजें पढ़ी है. Those of you who have studied from a book और जिनको लग रहा है पेपर हार्ड है, I would just recommend you एक बार go to arpitakarwa.com. Under course syllabus you will find a detailed list of writers. Just tally all these writers के नेम जो जहां जहां से क्वेश्चंस आए. जैक कराउ है, जॉन लॉक है, इन सब के नाम आप टैली करिए एंड यू कैन क्लिक ऑन Ctrl+F टू फाइंड इट ऑन दैट पेज. तो आपको मिल जाएंगे इफ यू डोंट वांट टू स्क्रॉल सो लॉन्ग. आप देखिए ऑल द राइटर्स वही हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं, बिकॉज जो हमारा ऑनलाइन सिलेबस है जो हमने डिस्प्ले कर रखा है वेबसाइट में, वो आफ्टर 10 इयर्स के स्टडी के बाद हमने बनाया है. जो क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं, जिन ऑथर्स को रिपीटेडली पूछा जाता है, उन टॉपिक्स को डाल के. एंड इफ यू लुक एट इट यू विल be surprised that this time they have asked all the questions from those
राइटर्स ओनली, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग राइटर से आए हैं। डेफिनेटली 5-7 क्वेश्चंस आए हैं, क्यों आए हैं आई एम गोइंग टू एड्रेस दैट, बट ओवरऑल 90% पेपर एज इट इज जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनसे हर साल आते हैं उन्हीं से आए हैं। नाउ वन थिंग I would also want to talk about is the overall analysis. Now overall analysis की अगर बात करें, so something that I'm very very sure of is that the paper was moderate. It wasn't difficult. It wasn't easy. It wasn't difficult. Moderate था. Why moderate? Because see, the paper of UGC NET, as I always say, is divided into three sections. So out of all the 100 questions that are coming in paper 2, the same applies for paper 1 also, but just for easier calculation I'm talking about paper 2. So paper 2 के जो 100 questions है उसको how do they divide is that 50% questions are moderate, 25% are very easy, something that if you have gone through any one book of one guidebook, you can answer a few of them correctly, and 25% are very hard. Very hard as me, that means that's something that not a lot of people can answer. और इन 25 में भी 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इवन एज अ टीचर आफ्टर 6 years of UGC NET teaching experience, after being a gold medalist of Rajasthan University, after doing PhD, after clearing NET multiple times, I cannot answer. वो 10 क्वेश्चंस वो जानबूझ के डालते हैं टू ड्रॉप द कट ऑफ। जो बाकी 25 क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ डिफिकल्ट होते हैं, उनमें से 10 क्वेश्चंस तो बहुत अजीब से होते हैं विच मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट आंसर। रेस्ट 15 जो है वो डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। इफ यू हैव डन अ वेरी वेरी थरो स्टडी तो आप वो 15 क्वेश्चंस कर पाएंगे, बट अगर आपने उतनी थरो नहीं करी है तो आप वहां पे कहीं ना कहीं आप सारे क्वेश्चंस राइट नहीं कर पाएंगे। सो ओवरऑल अगर पूछा जाए, सो द पेपर वाज मॉडरेट, इट वाजंट वेरी डिफिकल्ट, इट वाजंट वेरी इजी। नाउ वन मोर थिंग, बहुत लोग ये बोलते हैं, आपको सुनने में भी आएगा, हो सकता है आपको खुद को फील हो कि यार मेरे को तो पेपर बहुत हार्ड लगा, मुझे तो मॉडरेट नहीं लगा। अर्पिता तो शायद कुछ भी कह रही है, मॉडरेट नहीं था, ये तो काफी डिफिकल्ट था। लेट मी टेल यू, हर पेपर हार्ड उस बच्चे को लगता है जिसकी प्रेपरेशन कंप्लीट नहीं है। Suppose if you look at the entire syllabus of UGC NET, British literature, American, post-colonial, European, Indian literature, literary theory, literary criticism, literary movements, cultural studies, English in India, research methodology, and language and pedagogy, ये सारे यूनिट्स हैं। इसमें से अगर आपने 2 यूनिट ही पढ़ी है, सपोज यू जस्ट गॉट द टाइम टू कंप्लीट ब्रिटिश लिटरेचर एंड लेट्स से अमेरिकन लिटरेचर, आपने बाकी कुछ नहीं पढ़ा, सो जो बाकी जगह से क्वेश्चंस आएंगे वो आपको डेफिनेटली हार्ड लगेंगे। ऑल दोस क्वेश्चंस विल लुक एलियन टू यू, जस्ट लाइक शेक्सपियर सेज दैट this sounds Greek to me. That means a language that I don't know. If somebody is speaking in Greek, I would not understand it. That doesn't mean what he's saying is hard. It's just that I am not well equipped with the language. Similarly, if you have left a significant portion of your syllabus, then all those writers will look Greek to you. I'll tell you an example. There was this one student which I was interacting with in the webinar, and he enrolled in our course a month before the exam. So he was only able to complete till Victorian period of British literature. Now, when that person is going to sit in the front of the computer screen on the day of the paper, he will find a lot of writers coming from literary theory. He'll literary theory and literary criticism. For example, Ferdinand de Saussure, Jack Lacan, Raymond Williams, and let's suppose there would be writers, or there would be terms like Beat Generation, or there would be terms like Kit Kat Club. Now, all these terms will be very, very unfamiliar to, will sound very unfamiliar to him, and he'll be like, oh my god, the paper was difficult. But the paper wasn't difficult, the paper was moderate. The only thing is that because you did not complete the syllabus, you feel that the questions did not come from what you studied. आपने सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ा है, या आपने सपोज लेट्स से आप सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर का हाफ कवर करके गए हैं, दैट इज स्टिल एनलाइटनमेंट, एंड वहां तक 12 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस आए, वो 15 में से आपको 12 क्वेश्चंस आ गए, दैट मीन्स आपने 15 में से 12 अटेम्प्ट करे तो आपने जितना पढ़ा उतना आपको आता है। जो आपने नहीं पढ़ा वो तो आपको वैसे भी नहीं आ सकता। अगर आज मैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का पेपर देने जाऊंगी तो मुझे तो पेपर डिफिकल्ट लगेगा ही, क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी नहीं है। सिमिलरली अगर कोई
बच्चा बिना इंग्लिश लिटरेचर का पूरा नॉलेज लिए जा रहा है, तो उसको पेपर डिफिकल्ट लगेगा। तो अगर आपको पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, तो आस्क योरसेल्फ वेदर द पेपर वाज डिफिकल्ट और वेदर यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। प्लस कई बच्चे ये भी बोलते हैं मुझे कि मैम हमने ना कोई गाइड बुक से स्टडी किया था, या हमने 2-3 बुक से पढ़ाई करा, या कोई फ्रेंड के नोट से पढ़ाई किया। Now what happens in these cases is that suppose you are studying from a guidebook and you are studying a topic of Alexander Pope. Now Alexander Pope के ऊपर उस गाइड बुक में हाफ पेज का मटेरियल है, दैट्स इट। Alexander Pope के माइनर वर्क्स उसमें नहीं है, मेजर वर्क्स की समरी, उसका एनालिसिस नहीं है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि अलेक्जेंडर पोप में आपने इतना सा पढ़ा, उसमें से हो सकता है क्वेश्चन नहीं आया, अलेक्जेंडर पोप के काफी डेप्थ से क्वेश्चन आया। सो आपको पढ़ने के बाद भी लगेगा कि यार पेपर तो हार्ड था, क्योंकि मैंने तो अलेक्जेंडर पोप पढ़ा बट मुझे तो तब भी नहीं आया। द पॉइंट इज दैट आपने अलेक्जेंडर पोप नेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा है। नेट में अलेक्जेंडर पोप के बारे में जो जो चीजें पढ़नी है वो सब आपने मिस आउट करी है। आपने उनके जो वर्क्स है उसकी समरी डिटेल में नहीं पढ़ी, जो इंपॉर्टेंट लाइंस याद करनी है वो आपने नहीं पढ़ी, जो माइनर वर्क्स उन्होंने लिखे वो नहीं पढ़े। अगर उन्होंने किसी को लेटर लिखा है, उस लेटर में कुछ कमेंट किया है, किसी क्रिटिक ने अलेक्जेंडर पोप के वर्क पे कमेंट किया है, आपने वो नहीं पढ़ा। अलेक्जेंडर पोप जिस टाइम पे रह रहे थे, वो किस लिटरेरी मूवमेंट का हिस्सा थे वो नहीं पढ़ा, उनके फ्रेंड ग्रुप में कौन था, किस राइटर से उनको प्रॉब्लम थी और उन्होंने किस पे एक क्रिटिसिज्म के तहत अपने पोएट्री में उसके बारे में कोई रेफरेंस दिया, वो आपने नहीं पढ़ा। आपने ये सब नहीं पढ़ा। जिसने ये सब पढ़ लिया है उसे इजी लगेगा अलेक्जेंडर पोप पे क्वेश्चन। सो अंडरस्टैंड, पेपर को कैटेगराइज करने से पहले कि ये हार्ड था, प्लीज यूज योर ब्रेन एंड थिंक अबाउट वेदर I am well prepared or not, right? Because UGC NET English is not a very easy exam. The main problem with the entire paper is that there is no syllabus. The syllabus says anything and everything written or translated in English. It is a very big thing. Anything under the sun is a part of syllabus, because Prem Chandra also comes as a syllabus, because it is his work was written in Hindi but was translated in English. Then Kalidas also becomes a part of English literature syllabus, even though he wrote in Sanskrit, but since it was translated in English, it is a part of the syllabus. And so many writers all around the world who are writing in English is a part of English literature. So that is the reason why I always insist that no matter how you are preparing, please, I am really, really holding my hands and pleading that go to my website, arpitakarwa.com. There is a free list of syllabus which is given to everyone. Anybody can access it free of cost. That is a syllabus that we teach in our online course, but we are making it available for everyone, pan India, so that students who are preparing even on your own can know what all writers they have to study and they are not lost, because there is no guidebook that has all the things in place. I would also suggest you one thing. There is a book, you'll find a lot of books on British literature, William J. Long, Routledge History of English Literature. Then we have David Deitchie's. All these books are not giving complete information on British literature. Plus, the most important concern is there is no good book on American, post-colonial, Indian, American, and European literature. There is no good book through which you can study literary theory. Literary theory के जो writers हैं, उनके work से question आता है. Most of the books that you'll study, वहाँ पे उनके terms जो उन्होंने बताए. For example, फर्डिनांड दे सोशोर्न ने जो साइन एंड सिग्निफायर का कॉन्सेप्ट बताया उसे एक्सप्लेन किया जाएगा. पीटर बेरी है, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थियरी है, बट नोबडी इज मेंशनिंग द नेम्स ऑफ द वर्क्स दैट वाज रिटन बाय फर्डिनांड दे सोशोर्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. So please become a little more vigilant. Please understand the depth of the paper and accordingly start your preparation. And that is the reason why I always plead you that please download the syllabus that is there on the website, available free of cost. You can go to arpitakarwa.com, type it on Google, go to course syllabus button that is there on the home page. Click there, you'll get a 13 module syllabus which contains 850 topics that you must study for this exam. And please start your preparation with that. Also, how much should you study for each topic? For that, I am giving some demo lectures which are available free of cost on our website. So there's another website on which we give paid courses, courses.arpitakarwa.com. There, if you go, there is a specific course which is available free of cost. You just have to sign up. You don't have to even buy anything. There you will find
few free lectures. One of them is already uploaded on YouTube, Paradise Lost. You just type Paradise Lost summary by Arpita Karwa, you'll get my lecture. It's a 25 minutes lecture where I've explained Paradise Lost. Now I want all of you to watch that video so that you know कि Paradise Lost जैसे टेक्स्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है. आप जब पैराडाइज लॉस्ट किसी भी वेबसाइट या किसी बुक या किसी गाइड से पढ़ते हो, सो आप सिर्फ स्टोरी पढ़ के रह जाते हो. क्वेश्चन स्टोरी से नहीं आता, क्वेश्चन बहुत बारीकियों से आता है. बुक 1 में क्या पूछा गया, बुक 2 में किसका मेंशन है, उन्होंने गैलीलियो गैलीली का मेंशन किया है, उसके बारे में पूछा जाता है. एडम ईव के बीच में जो टिफ थी, ईव को क्यों क्रिएट किया गॉड ने, ये पूछा जाता है. ईव को एडम की रिब में से क्रिएट किया गया, ये तक पूछा जाता है. ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी जरूरी है. सो आपको कैसे किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना है, इसलिए आई एम टेलिंग यू there's a free lecture available on YouTube. वो मैंने डाला इसीलिए है because a lot of students don't have the paying capacity. They want to study on their own. They don't want to enroll in the course. So I want to guide them so that they don't make this mistake and they have to give the exam repeatedly. That is the reason why I am telling you again and again कि एक बार strategy समझिए पढ़ना कैसे है. नंबर 2 ये समझिए कि सिलेबस क्या है. बिकॉज यूजीसी नेट ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, इट इज nothing. You cannot clear net just by reading unit 1 poetry, drama, fiction, non-fiction. इससे आपको नहीं समझ आएगा कौन से फिक्शनल टेक्स्ट, कौन से राइटर्स, कौन से पोएट्स, कौन से ड्रामेटिस्ट पढ़ना है, वो आपको चाहिए. वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है. यू कैन चेक दैट आउट. यू कैन चेक आउट डेमो लेक्चर्स जिससे आपको पता चले पढ़ना कैसे है. एंड देन you can start your own preparation. One more thing that I would want to suggest right here is that if you look at the entire paper per se, if you look at the entire paper, I would say based on the questions that I've received, 90% क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर आप जो मैंने सिलेबस बताया है उसमें से आप पढ़ते हैं, आप 90% क्वेश्चंस आराम से क्लियर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, अगर आपको सही तरीका पता है पढ़ने का और आपने सही सोर्सेस को रेफर किया है. Because why I'm saying this so confidently and out there on YouTube, when I have 5 lakh subscribers, we are handling India's biggest YouTube channel in UGC NET English, and I'm so confidently saying this that 90% questions आप कर पाएंगे easily attempt, because हर साल every year जब भी नेट होता है 100 to 120 स्टूडेंट्स हमारे कोर्स से नेट क्लियर करते हैं. एंड वो 120 स्टूडेंट्स से जब मैं बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उन्हें पेपर डिफिकल्ट नहीं लगा था, बिकॉज दे प्रिपेयर्ड इट इन अ वे. उन्होंने हर एक लेक्चर मेरा सुना है, उन्होंने उन सारे पॉइंट्स को याद किया है, कुछ और मटेरियल रेफर नहीं किया, सिर्फ मेरे जो बताए हुए पॉइंट्स उनको रेफर किया है एंड उनके बेसिस पे एग्जाम क्लियर किया है. सो आई नो दैट जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. दैट इज वाई आई एम सेइंग कि अगर आप वो रेफर कर लेते हैं सिलेबस, आप खुद से भी अगर प्रिपरेशन करते हैं, बट आपको पता है कि पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है, 100% of your problem is resolved. Okay, so my overall analysis about the paper in one word is that the difficulty level was moderate. It wasn't hard. जिन्हें भी लग रहा है, please reassess कि आपने कैसे पढ़ाई करी है, क्या क्या लूप होल्स आपने छोड़े हैं. Now coming on to the fourth topic, which is cut off. So अभी तक मैंने 3 चीजों पे बात करी. UGC नेट पेपर 1 कैसा था, पेपर 2 कैसा था, and difficulty level क्या था, overall analysis basically. Now I'm going to talk about the fourth topic, which is expected cutoff. So considering the paper and based on मैंने जो webinar, Zoom webinar लिया था मेरे students के साथ जो हमारे online course का part है, plus मैंने जो WhatsApp and calls पे students से बात करी है, based on all that collective data, I can say that net का जो cutoff है for general category is going to be around 58%. JRF will go around 63 to 65%. ST, SC, OBC, PWD, EWS, इन कैटेगरीज का कट ऑफ क्या रहेगा, एंड एक पूरा टैब्यूलर हमने बना रखा है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, विच यू कैन गेट फ्रॉम व्हाट्सएप. यू जस्ट हैव टू ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन द ऑफिशियल नंबर. वैसे तो इट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, आप देखेंगे उसमें हमने नंबर दे रखा है. वेबसाइट पे भी हमारा नंबर डिस्प्लेड है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर दैट ऑन द live as well. The number is 7976603731,
I am repeating it, 7976603731. Just type, please share expected cutoff, and my team is going to share you the entire expected cutoff जो हमने after speaking to a lot of students बनाई है. एंड वी आर वेरी वेरी श्योर कि हर साल हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपने यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, हर बार लगभग 1-2% ऊपर नीचे ही नेट की कट ऑफ आती है. कई बार तो एग्जैक्ट जो हम बोलते हैं वो आ जाती है, बट इट हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट वी से. वी जस्ट डूइंग अ गुड एनालिसिस, एंड बेस्ड ऑन दैट हम अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर करते हैं. सो नेट का कट ऑफ वुड बी फॉर जनरल कैटेगरी 58%, जेआरएफ वुड बी 63 to 65%. लुकिंग एट द क्वेश्चंस, मुझे लग रहा है जेआरएफ हाई जाएगा बिकॉज डिफिकल्ट नहीं थे क्वेश्चंस, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ द अदर स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड, सो कांट रियली से अबाउट इट. ओके, सो प्लीज जिनको भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आते हैं, आंसर की आते हैं, वी विल अपलोड इट ऑन द वेबसाइट, वी विल ऑल्सो शेयर इट विथ यू. सो प्लीज message us on WhatsApp that please share expected cutoff. My team is going to share the expected cutoff. If you want to get the detailed syllabus that I was talking about, उसका लिंक चाहिए, तो हमने पूरा मॉड्यूल्स के हर मॉड्यूल जो हम पढ़ाते हैं उनमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाते हैं उसकी भी लिस्ट हमने बना रखी है व्हाट्सएप पे. विल शेयर दैट एज वेल. सो आप प्लीज शेयर करिएगा कि आई वांट टू नो द यूजीसी नेट इंग्लिश सिलेबस मॉड्यूल वाइज लिस्ट. आई टेल माय टीम कि जिनका भी ये मैसेज आता है, प्लीज शेयर द मॉड्यूल 1 to मॉड्यूल 13 के सारे लिंक्स, सो दैट हमारे जो 13 मॉड्यूल्स है वो आपको पता चले और आप अपनी प्रेपरेशन उस हिसाब से स्टार्ट कर पाए. Now let's look at the next question, which is how to know whether you have qualified the paper or not. Now cut off मैंने बता दी, difficulty level मैंने बता दिया, you in your brain know कि आपने पेपर कैसा दिया है. So the question is that how to know right now when the question paper answer key is not out, that whether you are somebody who will be on the other side of the cutoff, or will you fall short and not clear the cutoff. So see, I'll tell you one very very simple trick which has worked from past 6 years, because I've been in teaching net since past 6 years, 2018, and I've taught more than 10,000 students, and based on all those students experience, I'm saying you that if you can confidently say today that you have attempted 70% questions right in both paper 1 and paper 2. So paper 2 में तो 70 questions right होने चाहिए, paper 1 में around 30-35 questions out of 50. If you are very confident कि ये तो मैंने सही करे ही है, बाकियों में मैंने तुक्का मारा है, ये 70 क्वेश्चन तो सही है, if you are this confident, then that means you can clear net this time for sure. अगर आपको लगता है 40-50 questions आपने सही करे हैं, I will very very clearly say that you will not clear net. देखिए, एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि कट ऑफ जाएगी अराउंड 58%, एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि 50 क्वेश्चंस 55 क्वेश्चंस आपने सही करे हैं तो चांस नहीं है. Why am I saying this? Because let me tell you that what happens is that when we say that 70% क्वेश्चन सही है, 70 क्वेश्चंस मैंने सही अटेम्प्ट करे हैं, सो हम कई बार खुद को बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं. वी ऑल हैव दिस टेंडेंसी कि हमें लगता है हाँ ये तो सही होगा, ये तो मुझे पता है, ये याद है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो 70 हम सोच के चलते हैं ना, उसमें से सही तो 55 ही होते हैं, 20, 25, 15 गलत होते ही होते हैं. ये क्यों होते हैं गलत? क्योंकि हम अभी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन है, हमने उसका एक आंसर मार्क किया है, हमें क्वेश्चन ढंग से याद नहीं है, हमने इसलिए हम नेट पे आंसर चेक नहीं कर सकते, हम किसी से पूछ नहीं सकते, तो हमें अपने माइंड में लग रहा है कि क्वेश्चन हमने सही अटेम्प्ट किया है. बट जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वो क्वेश्चन तो आपने सोचा था आपने सही किया है, बट वो सही नहीं किया. और ये होता आया है. मैंने अपनी हर स्टूडेंट से जब भी बात करी, और जो बोलते हैं ना कि 50 क्वेश्चन हमने सही करे, वो बहुत केसेस में नेट क्लियर नहीं कर पाते. जो ये बोलते हैं कि 70, कोई बोलते हैं 90 क्वेश्चंस हमने सही करे, हमें एकदम श्योर है, वो सब नेट क्लियर करते हैं. क्योंकि तब भी जो 70 बोल रहा है उसके भी आते 60-65 ही है, 70 पूरे किसी के भी नहीं आते हैं. जो 90 बोल रहा है वो जेआरएफ निकाल देता है, उसके 70 आ जाते हैं, बट उसके भी 90 नहीं आते. सो वो 15-20 क्वेश्चंस का मार्जिन में लेके चल रही हूँ, एंड बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि खुद को गलत होप्स मत दीजिए. लेट अस बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. Those of you who are feeling disheartened with what I just said,
There's a very, very special video that I've made with a lot of love for everyone. The title of the video on YouTube is "This is what Arpita ma'am has to say to everyone who thinks that they are disappointed with the paper." I'll right after this live, I'm going to put the link of that video in the description also, so that you can just click and watch that video. It's a 3-minute video, a video which I've made with a lot of love, and I want each one of you to watch it right after this live. That video is going to give you a very different vision of how you are feeling right now if you are disheartened. Please do watch that video. It's my heartfelt request. Please watch that video. Coming back to the topic, how to know whether you've qualified. So my suggestion to you would be, if you think that 70% questions aapne sahi kare and you're confident about it, then it's a very safe space. You can just relax and do whatever you want to do. You don't have to stress about the next net exam. But agar aapko lagta hai ki 60, 50, 40 or lesser than that आप confident है, then that means that it's time to gear up and start for the next net exam. Okay, right. So अब बात आती है कि जिनको लग रहा है कि उन्होंने 70% से कम क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सही करे हैं, उनको दिसंबर के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. Right. So one very simple thing that I would like to suggest is that start right now. Right now, that means today it's 17th June, 9:51 p.m. I want you to start your net preparation for December 2023 from tomorrow morning at whatever time you wake up. So 18th June is the time when you should start your preparation. I don't want you to think about cutoff, think about question paper, answer key, correction window, एंड एग्जाम रिजल्ट, बिकॉज ये पूरा प्रोसेस जो है ये कम से कम 1 महीने का है. नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर बहुत सारी चीजें होगी. नेट इज गोइंग टू रिलीज द एक्सपेक्टेड, नेट इज गोइंग टू रिलीज द क्वेश्चन पेपर, देन द आंसर की, देन इज गोइंग टू रिलीज करेक्शन विंडो का एक 10 days का पीरियड, देन आफ्टर अ फ्यू डेज विल रिलीज द रिजल्ट. द एंटायर प्रोसेस विल टेक 1 full month. नाउ इफ you think you have only given 40% पेपर कॉन्फिडेंटली, बाकी में आपने तुक्के मारे हैं या कईयों में आपने गेस वर्क किया है, ऐसा आपको लग रहा है, सो ये 1 महीना मत बर्बाद होने दीजिए. क्यों नहीं होने दीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको. बिकॉज देखिए, पेपर जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते. उसके बारे में बहुत कुछ सोच के कुछ नहीं होगा. उससे क्या लेसन लेना है, क्या सीखना है, वो हमें सीखना चाहिए एंड आगे मूव करना चाहिए. क्यों नहीं पढ़ा, क्यों क्लियर नहीं हुआ, काश वो क्वेश्चन सही कर लेता, काश ये हो जाता. थिंकिंग अबाउट ऑल दिस इज अटरली रिडिकुलस. कुछ भी नहीं होगा. आपको सोचना है, 15 मिनट का टाइमर लगाओ, गिल्ट में चले जाओ, सोच लो, और 15 मिनट बाद बोलो कि अब क्या करना है, लेट मी स्टार्ट डूइंग दैट. नाउ 1 महीना जो आप वेस्ट करेंगे अगर आप रिजल्ट का वेट करते हैं, तो क्या होगा. आई टेल यू सम प्रॉब्लम्स दैट माइट अगर. नंबर 1, 1 महीने में अगर आप मिनिमम 3 घंटे भी पढ़ते हो रोज, तो आपने 90 घंटे वेस्ट करें. 90 घंटे वेस्ट करने का मतलब है, आप चाहते तो आप एक पूरा लिटरेचर कवर कर सकते थे. आप चाहते तो आप अमेरिकन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इस एक 90 आवर्स के पीरियड में कवर कर सकते थे, याद कर सकते थे, जो अपॉर्चुनिटी आप वेस्ट कर देंगे. Secondly, the next 6 months is going to be very, very difficult for everyone who lives in India. Why? Because the next 6 months are filled with holidays. We have Raksha Bandhan, we have Durga Puja, we have Diwali, we have Christmas, New Year, and a lot of other state-wise festivals. Because of all this, हमारा momentum बहुत बार ब्रेक होगा. रक्षाबंधन आया 2-3 दिन का गैप, दिवाली आई 7-8 दिन का गैप, मिनिमम बता रही हूँ मैं. जिनके घर में दिवाली की सफाई होती है, जो खुद करते हैं, वो तो भूल जाओ, 15-20 दिन का गैप. दुर्गा पूजा आई, डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेट यू आर इन, कितना सेलिब्रेशन होता है, उतना गैप. सो ये जो गैप्स है, इसकी वजह से आप वैसे भी 30 से 40 दिन नहीं पढ़ पाएंगे इन द नेक्स्ट 6 months पीरियड. सो आई वॉन्ट यू टू सेव those 30 days जो आप बाद में मिस आउट करेंगे, उसको आप पहले कॉम्पनसेट कर लें, एंड यू आर अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन. जो और स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बात नहीं सुन के 1 महीना वेट करेंगे और उसके बाद प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप उनसे बेटर प्लेस पे होंगे जब वो स्टार्ट करेंगे. सो शाहरुख खान सेज वन वेरी ब्यूटिफुल लाइन विच इज वेरी डियर टू माई हार्ट, दैट कई लोग बोलते हैं ही वॉज एन ओवरनाइट सक्सेस. सो ही सेज दैट पीपल डोंट नो हाउ मेनी स्लीपलेस नाइट्स आई हैव वर्कड टू गेट वेयर आई एम, जिसे आप ओवरनाइट सक्सेस बोलते हो. तो जो भी लोग
नेट क्लियर करता है, हम बोलते हैं अरे यार वो तो लकी था, उसने जो पढ़ा वो आया। नहीं, आप घर में झाँक के देखिए उसके, उसने बहुत ऐसी रातों में मेहनत करी है, बहुत ऐसे घंटों में मेहनत करी है जब कोई और बच्चा बैठ के मस्ती मार रहा था, जब वो चिल कर रहा था, जब वो टाइम पास कर रहा था, तब उस इंसान ने बैठ के पढ़ाई करी है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई लाइफ इज़ पेइंग हिम दैट रिवॉर्ड। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग वेरी, वेरी क्लियरली दैट ये 30 डेज़ का पीरियड बहुत सेफ है, अभी कोई फेस्टिवल नहीं है, कुछ नहीं है। अभी पढ़िए और नेट के लिए दिसंबर के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। Another important thing that I want to tell you here is that द एंटायर 6 मंथ्स पीरियड जो आपका आने वाला है, उसमें आपको एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी है। जो स्ट्रैटेजी मैं अभी लास्ट सेगमेंट में बात करूंगी, विच इज टाइम टेबल। बट उससे पहले एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं, तो उसका डीमेरिट ये है कि जो गिल्ट आपको इस पेपर में देने के वक्त आया ना कि यार काश मैंने ये एक यूनिट और पढ़ ली होती, तो मेरा जो अभी 55 या 52% आ रहा है ना, जो 58 आके कट ऑफ क्लियर हो जाता, वो नहीं रहता। ये सेम गिल्ट दिसंबर में भी आएगा, क्योंकि आप सेम गलती जो आपने अभी से 6 महीने में करी, जब आपने बहुत टाइम वेस्ट किया होगा, वो सेम गलती आप नेक्स्ट 1 महीने में करने वाले। सो जस्ट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक दैट यू हैव मेड। एंड मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज मैंने जितने स्टूडेंट्स से मैं हर साल बात करती हूँ, वो सब रिपीटेडली एक ही मिस्टेक करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम एड्रेसिंग दिस ऑन यूट्यूब, सो दैट एनीबडी ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस वीडियो कैन कॉन्टेम्पलेट कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ के साथ। ओके, one more special thing that I want to share here कि the online video course, the animated course that we've just started for UGC NET, and last 6 months से हम वो course दे रहे हैं, and there are animated videos जो Paradise Lost का video बताया, this is one of the video of that entire course. कुछ और sample videos are available on our website courses.arpatakarwa.com. You can check that out. That video course that we are providing for December also, we are giving a special 2000 rupees off if you enroll tomorrow and day after. The reason why I'm giving this off is very simple. I want you guys to take an initiative and start your preparation, because आप enroll कर लोगे, आपका 6 months का आप अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो, आपके दिमाग में रहेगा मेरा पैसा लगा हुआ है, मुझे पढ़ना है। एंड दैट इज द रीजन वो मैं डेलिबरेटली कल परसों ही दे रही हूँ डिस्काउंट, बिकॉज जो लोग आज ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, प्लीज आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप 1 महीना वेस्ट करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो प्लीज एनरोल टुमारो एंड स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम टुमारो। आई एम टेलिंग यू, नेट इज नॉट अ इजी जर्नी, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। एंड आप जब तक ब्रेस अप होके अपने आप को एकजुट करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। दैट इज द रीजन यू गेटिंग अ 2000 rupee off early. It's an early bird discount. The reason we are giving it is because we want to motivate students to enroll early and start preparation early. Okay, so those of you who want that coupon code can contact my team on the same number 7976603731, and you can enroll in the course. Please, before enrolling, I want you to check the online course syllabus. Please check it very thoroughly, हम क्या दे रहे हैं, check demo lectures, check the PDFs we are giving, check the mock test, sample mock test, सब कुछ हमने free of cost आपको दे रखा है, जिससे आप अच्छे से देखें, आप confidence feel करें, तभी enroll करें। We would never want any student to come to our course and feel कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वी वॉन्ट देम टू फर्स्ट फील आवर कोर्स। ट्रायल देखिए, आप एनरोल करिए, 5-7 वीडियोस आप देखिए, समझिए, एंड देन इफ यू फील दैट ओ वाओ आई लाइक इट, जिस तरह से ये एनिमेटेड तरीके से स्टोरीज बताई जा रही है, मुझे याद हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है, आई एम लाइकिंग द विजुअलाइजेशन, आई एम लाइकिंग द फैक्ट्स जो दिए जा रहे हैं, मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, ओनली देन एनरोल। बिकॉज आई वुड नेवर वॉन्ट अ सिंगल स्टूडेंट जो मेरे कोर्स में आए जिसे मजा नहीं आए। द रीजन वाई वी आर पुटिंग इन सो मच एफर्ट टू गिव इंडियाज फर्स्ट एनिमेटेड वीडियो कोर्स फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश, हमारी कम से कम 25 लोगों की टीम दिन रात मेहनत कर रही है टू डिलीवर दिस वीडियो कोर्स, विच इज गोइंग टू बी अ ह्यूज वीडियो कोर्स। 900 वीडियोस आपको हम लोग दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मोर देन 3000 क्वेश्चंस हम आपको मॉक टेस्ट में दे रहे हैं। और ये सब इसलिए दिए जा रहा है कि आपका जर्नी एकदम स्मूथ हो, आपको मजा आए, और आपको पढ़ने में ये नहीं लगे कि मुझे पढ़ना है, आपको लगे वाओ यार मुझे पढ़ना है, मजा आ रहा है स्टोरी पढ़ के, समझ में आ रही है स्टोरी, इंटरेस्ट आ रहा है लिटरेचर में, देन आप क्लियर करें। बिकॉज वी बिलीव इन हैप्पी लर्निंग, इट शुड नॉट बी सैड लर्निंग, इट शुड बी हैप्पी लर्निंग।
सो हैप्पीनेस से पढ़ना है. सो अगर आपको लगता है तो प्लीज चेक आउट द डेमो लेक्चर्स एंड देन यू कैन एनरोल. द डिस्काउंट कूपन माय टीम विल गिव यू. नाउ लेट्स एड्रेस द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक. काफी लंबा वीडियो हो गया 53 मिनट्स का. सो सॉरी, आपका काफी समय मैं ले रही हूँ, बट मुझे हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था, तो आई जस्ट एक्सीडेड द लिमिट. मैंने सोचा था 30 मिनट्स के आसपास का मैं लाइव वीडियो लूंगी, बट इट एक्सीडेड. बट आई थिंक you will get benefit out of it. लास्ट टॉपिक लेते हैं फटाफट, which is टाइम टेबल. नाउ टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो देखिए दो तरह की चीजें हैं. एक तो ये है कि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स दिसंबर के लिए. एक है अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं हमारे. ठीक है, कोई भी कोर्स में एनरोल करें, हर टीचर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है. आई कैन टेल यू माई स्ट्रैटेजी. मैं दोनों तरह की चीजें आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या रहेगा. दोनों में प्रोसेस सेम है. आप खुद से भी पढ़ें, आप चाहे हमारे कोर्स में एनरोल करें, सेम तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए. नाउ फर्स्टली मैं चाहूंगी अगर आप खुद से भी एनरोल कर रहे हैं तो जो हमने सिलेबस दिया है मॉड्यूल वाइज. मॉड्यूल 1 इज ब्रिटिश लिटरेचर, 2 इज अमेरिकन, 3 इज पोस्ट colonial, 4 is European, 5th is Indian, 6th is literary criticism, 7th is theory, 8th is literary terms and devices, 9th is literary movements, 10th in English in India, then we have language and pedagogy, we have cultural studies, and we have research methodology. So all these 30 modules are there. Now I want you to first begin with module 1, British literature. So we are giving you 900 lectures. 900 लेक्चर्स में से 350 लेक्चर्स जो हैं वो ब्रिटिश लिटरेचर के हैं. अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं तो आपको सेम टाइम लगेगा, बस आप टाइम डबल कर लीजिए. आप अगर दिन में हमारे साथ 2 घंटा पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ने में आपको 4 से 5 घंटा लगेगा. क्यों? क्योंकि हम आपको नोट्स बना के दे रहे हैं. आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको पहले तो 4 वेबसाइट्स, 4 बुक्स रेफर करके नोट्स बनाने पड़ेंगे और फिर याद करना पड़ेगा. हमसे पढ़ते हैं तो हम आपको नोट्स पूरा दे रहे हैं, आपको वीडियो समझा रहे हैं, आपको सिर्फ याद करना है. सो आपको टाइम पीरियड सेम रखना है. अगर मैं बोल रही हूँ कि ब्रिटिश लिटरेचर आपको 2 महीने में कवर करना है, तो आप खुद से पढ़े चाहे हमारे साथ पढ़े, आपको 2 महीने में ही करना है, क्योंकि हमें दिसंबर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं. बट आप अगर अभी हमारे साथ 2 घंटा दे रहे हैं तो खुद के साथ आपको 5 घंटा देना होगा. 5 घंटा भी मैं मिनिमम बता रही हूँ. नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज अलेक्जेंडर पोप का मटेरियल आपको एक जगह से नहीं मिलेगा, टीएस एलियट के एक जगह नहीं मिलेगा. जेन ऑस्टन आप पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग वेबसाइट से उसके अलग अलग वर्क्स की समरी पढ़नी होगी. सेंस एंड सेंसिबिलिटी हो सकता है आपको एक वेबसाइट से आधी समझ आए, दूसरे वेबसाइट से बाकी आधी आए. आपको कंपाइल करके उसकी पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी. सिमिलरली आपको ये सेम चीज प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा नॉर्डंगर, एबे सबके लिए करनी होगी. सो लेंदी होगा. So sorry for अचानक से कुछ पॉपअप हुआ था, I got distracted. Right, so coming back to the topic. So आपको जेन ऑस्टन के अगर हमने 6 लेक्चर्स दिए हैं, so वो 6 लेक्चर्स आपने 2 घंटे में पढ़ लिए, 15-20 मिनट्स के लेक्चर हो गया. आपने पढ़े, याद करें, एंड यूर डन फॉर द डे. आप अगर खुद से नोट्स बनाते हैं तो कम से कम आप मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा आपको एक नॉवेल को समझने में लगेगा, समरी को. सो जेन ऑस्टन की 6 नॉवेल्स हम पढ़ाते हैं. सो वो 6 नॉवेल्स करते करते आपको 6 घंटे लगेंगे और फिर आपको याद करना होगा. सो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. दैट्स द ओनली डीमेरिट ऑफ गोइंग बाय योर ओन वे. उसमें एक डीमेरिट हल्का सा ये होता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करके आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, जिसमें वी कवर ऑल द टॉपिक्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं. वी मिस आउट ऑन फालतू के टॉपिक्स जहां से नहीं आते, जिन डिटेल्स को हमें स्किप करना है, उन्हीं डिटेल्स को हम हाईलाइट करते हैं जहां से आते हैं. प्लस वी ऑल्सो टेल यू कि ये क्वेश्चन आया था, ये आया था, तो यू गेट इन टच विद इट. बट अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहें, नथिंग बैड. मैंने खुद ने जब पढ़ाई करी थी, आई मेड माई ओन नोट्स, एंड वो सब नोट्स को मैंने बड़ा करके, मेरे को 1 साल लगा था, एंड देन आई स्टार्टेड द कोर्स. सो कमिंग बैक टू द टाइम टेबल थिंग दैट आई वाज शेयरिंग. सो ब्रिटिश लिटरेचर 2 मंथ्स का पीरियड डिमांड करता है. Then comes the next topic, the most important topic, which is literary theory and criticism. इसको आपको कम से कम 1 महीना देना होगा. ब्रिटिश लिटरेचर में हमारे कोर्स में अराउंड 350 लेक्चर्स है. लिटरेरी टर्म्स एंड क्रिटिसिज्म मिला के 100 लेक्चर्स है. Now the reason why I'm saying you literary terms and literary theory and criticism को आपको next touch करना है. वैसे तो हमारा मॉड्यूल 6 and 7 है ये, बट हम बोलते हैं कि आप पहले कवर करिए. क्यों? क्योंकि यहाँ से 20% क्वेश्चंस आते हैं. ब्रिटिश लिटरेचर से 50% क्वेश्चंस आते हैं. सो 2 मंथ्स आपको ब्रिटिश लिटरेचर को देना है. 20% क्वेश्चंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी से आते हैं, उसे आपको 1 मंथ देना है. देन 3 मंथ्स आपके हो गए. अब जो बचा हुआ 1.5 महीना है, उसमें आपको यूरोपियन, अमेरिकन, पोस्ट कॉलोनियल, इंडियन लिटरेचर कवर करना है.
एंड लास्ट का 1.5 महीना जो है उसमें आपको बाकी सारे यूनिट्स, लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस, लैंग्वेज एंड पेडागोजी, लिटरेरी मूवमेंट्स, इंग्लिश इन इंडिया, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड कल्चरल स्टडीज, ये कवर करना है। इनसे कुल मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं। सो आपने अगर देखा 2 मंथ्स में ब्रिटिश लिटरेचर, 1 मंथ में लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म, 3 मंथ्स हो गए। 1.5 मंथ्स में चारों लिटरेचर्स, अमेरिकन, पोस्ट कॉलोनियल, यूरोपियन, इंडियन, एंड लास्ट 1.5 मंथ्स में आपने कवर किया बाकी सारे यूनिट्स, बाकी मॉड्यूल्स। आप एक बार अगर मेरा वेबसाइट पे सिलेबस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, जिन लोगों ने वो सिलेबस नहीं देखा है। ये स्ट्रैटेजी हम भी अप्लाई करते हैं, आपको अगर खुद प्रिपरेशन करनी है तो भी अप्लाई करनी है, बिकॉज अगर आप ये करते हैं तो 6 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको हाफ अ मंथ चाहिए फॉर रिवीजन। हाफ अ मंथ मैं बहुत कम बता रही हूँ, मिनिमम, बट हाफ अ मंथ आपको चाहिए फॉर रिवीजन। इसमें मैंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस इंक्लूड भी नहीं करी है, पेपर 1 इंक्लूड भी नहीं किया, उसके बावजूद इतना टाइम लग रहा है। तो आप देखिए हमारे कोर्स में भी 850 900 लेक्चर्स हैं, उसे कवर करने में आपको 6 मंथ्स लगेंगे। एंड रिविजन का टाइम आपको देना है, बिकॉज अगर रिवाइज नहीं किया तो आप काफी चीजें भूल चुके होंगे एंड एग्जाम में बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, दैट इज 18th of June, सो अगर हम देखें जून के 15 मंथ्स एक बार अप्रोक्सीमेटली पकड़ते हैं अपन, देन फुल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने दिसंबर एंड तक। अगर बीच में पेपर हो गया तो आपके पास तब भी टाइम कम है। और 15 दिन जून के, 6.5 महीने हैं, जिसमें 6 महीने आपको सिलेबस कवर करने में एंड 15 डेज रिविजन में लगेगा। सो सोच के देखिए इतना कुछ पढ़ना है। सो प्लीज स्टार्ट योर प्रेपरेशन टुडे। गिल्ट आएगा नहीं तो दिसंबर में कि काश मैंने ये टाइम वेस्ट नहीं किया होता। राइट नाउ, वन थिंग दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, जिन्होंने कुछ कुछ इनमें से कवर कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज कि मैंने अमेरिकन लिटरेचर तो मैम इस अटेम्प्ट से पहले अच्छे से पढ़ लिया था, अब मैं क्या करूं? अब आप अमेरिकन लिटरेचर अभी मत करिए, उसे हम बाद में लेंगे रिवीजन में। जो जो यूनिट्स आपने नहीं करी है उन यूनिट्स को अब आप करना शुरू करिए जब तक रिजल्ट नहीं आता। कई लोगों को लगता है मैम अगर रिजल्ट आ गया तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो वेस्ट हो जाएगा, 1 महीने बाद हमें पता चला हम तो नेट ही क्लियर कर गए, तो हमने 1 महीने जो पढ़ा वो वेस्ट होगा। नंबर वन गाइज, नॉलेज वेस्ट नहीं होती, कभी भी नहीं होती। और बिलीव मी और नॉट, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ये चीज बोली थी एंड उन्होंने कहा है कि जो हमने इस 1 महीने में पढ़ा ना मैम, जब हमने नेट क्लियर किया, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठे, हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस टाइम ये नॉलेज हमें काम आई। सो अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ भी लेते हैं और इनकेस आपका नेट हो जाता है तो दुखी मत होइए, क्योंकि ये जो आपने पढ़ा है ये आपको इंटरव्यू के लिए वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। कोई भी कॉलेज में आप जाएंगे तो बेस्ड ऑन योर नेट सर्टिफिकेट आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी पढ़ाने के लिए, आपको पहले वहां पे इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू में यू कैन नॉट से कि देखिए मैंने नेट में ये 3 यूनिट करी थी तो मैं इन्हीं से सवाल आंसर कर सकता हूँ। हो सकता है वो आपसे पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन पूछे, हो सकता है वो आपसे लिटरेरी टर्म्स पे पूछे, आपसे कोई भी ऐसा टर्मिनोलॉजी पूछे जो आपको, आपने नेट के लिए नहीं पढ़ा है। अगर वो आप अभी पढ़ लेते हैं जो आपके नेक्स्ट नेट में तो काम आएगा ही, बट इनकेस आप नेट नहीं देते हैं, आपका नेट हो जाता है, तो भी वो इंटरव्यू में आपको क्लियर करने में बहुत मदद करेगा। सेकेंडली, जिनको लग रहा है कि नेट हो सकता है, आपको जेआरएफ के लिए भी तो अटेम्प्ट देना है। तो आप अगर अभी 1 महीना पढ़ते हैं तो आप जेआरएफ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आपका दिमाग बहुत बार बोलेगा कि अभी नहीं करते, अभी तो एग्जाम दिया, रिलैक्स करते। आई वुड सजेस्ट एक बार जेआरएफ अपने हाथ में ले लीजिए, दिसंबर का एग्जाम देके, फिर आपको काफी समय मिलेगा लाइफ में रिलैक्स करने को। अभी रिलैक्स करके बाद में रिग्रेट करने से बेटर है अभी पढ़ लो, बाद में एग्जाम दे दो, क्लियर कर लो और फिर चिल होके रिलैक्स करो बिना गिल्ट के। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके, राइट, सो विद दैट नोट आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंटर्स। मैंने आज जूम लाइव से पहले कुछ बहुत ही फटाफट में बहुत रफ नोट्स बनाए थे, जो जो चीज़ें मुझे शेयर करनी थी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं कुछ मिस आउट ना कर पाऊँ। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो मुझे बोलना था। जो भी ये, जिन्होंने भी ये पूरा जूम सॉरी यूट्यूब लाइव देखा है, जूम लाइव में इसलिए बोलती हूँ बिकॉज आई कीप ऑन डूइंग दैट विथ माई स्टूडेंट्स, तो वो मेरे मुंह पे आ जाता है। बट जिन्होंने भी ये जूम यूट्यूब लाइव पूरा देखा है, आई एम वेरी grateful that you all have listened so patiently, and thank you for being such an interactive audience. I was seeing that आपके बहुत सारे comments आ रहे हैं, though I was not able to take a lot of you know
questions, but let me see if I can just share with you a few comments and answer a few questions, and then I'm going to wrap up. You guys have to sleep because from tomorrow you're going to study, I'm pretty sure. Okay, so okay, I think okay, there are too many questions. Okay, so I have Tarushi saying thank you, Suman saying good evening. Thank you, Anjali. Thank you so much. So a lot of questions are there. I think I'm going to exceed the time limit. So what I would suggest all of you is to, think about, ponder upon whatever I've said. Please don't get worried about whatever is happening in the UGC net world. एग्जाम में चीटिंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोच के कुछ नहीं होगा। हमारा कंट्रोल है हमारी पढ़ाई पे, हम अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें, एंड देन पढ़ाई पे फ़ोकस करने के बाद में हम अपने रिज़ल्ट्स पे फ़ोकस करें। नेट में क्या होगा आपका, या आपने जो एग्ज़ाम दिया उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, वी कैन नॉट do anything about it. So what is the point of thinking so much about it? Rather, let's think about something where we can do something. Okay, so with that note, I would like to take a leave. That's it from my side for this lecture. I'll meet you very soon in the next lecture. Till the time we meet next, happy learning, keep loving literature, and stay tuned to arpitakarwa.com. Bye bye. Good night.